Okay, namaste and good evening to everyone. My name is Sachi Khemuka. I live in Nagpur. ये जो सेशन रहेगा थोड़ा सा मिक्स्ड इंग्लिश और हिंदी में रहेगा क्योंकि काफी लोगों को हिंदी नहीं समझ में आती है. सो प्लीज बेयर विथ मी. आई एम श्योर आपको सब समझ में आएगा जितना मैं आपको समझाने वाली हूँ आज इस. And hopefully we will have a long-term association. So my name is Shachi Khemuka and I am a yoga instructor, government certified yoga instructor. I am a teacher or instructor in the FACE Yoga Instructor course from Shubh Yoga Foundation. So Shubh Yoga Foundation has come up. It's situated in Rishikesh. I would, just take an opportunity to talk about this foundation for just 1 or 2 minutes. Uh, 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 Please, bear with me. And if you have any questions, please ask me in the end of the session. I request you everyone to keep yourself on mute. Okay. So, Shubh Yoga Foundation is situated in Rishikesh and it is a dedicated institute. And the founders are Mr. Rajiv Kaswal and Mr. Sachidanand Kaswal. They have come up with this beautiful and wonderful institute. They have lots and lots of courses on yoga, like, yoga 200 hours TTC, 300 hours TTC, 500 hours TTC. Other than these teachers training courses, they have some continuing education programs also, like yoga therapy, pranayam and meditation, face yoga, which we will be seeing today, and so many courses. So this is the face yoga workshop, a long term awaited workshop from the Shubh Yoga Foundation, and I thank you for this. Thank you, Shubh Yoga Foundation, to conduct this workshop today. Let's start. Let's start with a small prayer, 3 times Om chanting, and as we all do in our yoga classes. I'm sure we have so many of yoga teachers over here also today, and I think we have non-yoga background people also. So let's just start with a small prayer. Join with me. Om. 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 Your palms and keep it on your. So I welcome you all. I'm sure we have lots of yoga teachers. Can raise their fingers or hands? Who all are yoga teachers here? Already trained and already teachers who are taking classes. Lots of yoga teachers. And who are there for non-yoga background, who are joining this only for themselves. They are not interested in teaching someone. Who all are joining for themselves. Okay. ठीक है. बीच में आप हैंड रेस कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन हो या आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे हैंड रेस करके मैं आपको अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछने का टाइम दूंगी. ओके. सम पीपल आर सेइंग दैट दे कैन नॉट सी माय वीडियो. ये सबके ओके लिए मैम, है क्या? वीडियोज यस यस वीडियोज आपकी आ रही है. जिनके साथ भी ऐसी वॉइस का या फिर वीडियोज का प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार दोबारा ज्वाइन करें या फिर अपना नेट देख लीजिए. यहाँ से सब ओके है. हाँ. Sorry, ma'am, यहाँ Abhilasha से here. So can you just pin yourself because the people are joining in between, so they are coming up on the screen. So if you will Okay. just pin yourself, you will be there on the screen. Okay, I'll do that. I just did that actually, but yeah. तो भी All right. So मैम I का am there स्क्रीन on this. देखना है तो वो जहाँ पे मैम का दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पे तो वो पिन करे अपनी स्क्रीन में तो मैम का फोटो आपके सामने आ जाएगा. केवल बाकी और नहीं दिखेंगे. जी. मेरे वीडियो पे बाकी सब भी पिन कर लीजिए तो मेरा वीडियो आपके सामने पूरे स्क्रीन पे मेरा वीडियो दिखेगा. ठीक है. कहीं पर भी कुछ अगर मेरा आवाज कटती है, आवाज आई एम श्योर आनी चाहिए.
फेस हो सकता है बीच में कट जाए। मेरी तरफ से नेटवर्क पूरा रेक्टिफाइड है, इट इज ऑल गुड, हा झालं. नेटवर्क नहीं है। आता कोणतं वाला करते बोलली, हे बघ, हे एक समजून घे. Can please mute yourself? I request everyone to please mute yourself. ओके, नार्जिक मुल्क, ये कौन है मैम? आप एक बार देखना स्क्रीन पे ना, पार्टिसिपेट पे वहाँ पे ऑप्शन आएगा। हाँ कर दो। Ma'am, can you mute everyone? You can do from your side. Who is the organizer of this meeting? Okay, I'll do that one. And Hmm. I think all are gone, are now mute, right? Hopefully. Okay, fine. So let's start with today's workshop. Thank you everyone, all of you from different states and different cities to join this workshop. I have just told you about a little bit about the Shubh Yoga Foundation. Now let's come to this course. This is a workshop. This is basically a course for this is a workshop for the course. I'll tell you what happens in the course. फेस योगा के कोर्स में जो हम 1 महीने का कोर्स है, वो हम उसमें क्या क्या बताते हैं। व्हाट इज फेस योगा इज ऑल अबाउट। फेस योगा बहुत लोग जानते हैं, नाम जानते हैं क्योंकि आजकल काफी फेमस है, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या हम कर सकते हैं, फेस को कैसे चेंज कर सकते हैं, और क्या फेस पे ऐसी चीजें होती हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनली दिस इज अ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, दिस इज आवर बॉडी। जैसे जैसे साल बढ़ते हैं, एज होती है, एज बढ़ती है, एज के जो हमारे ऊपर वॉट एवर द साइंस ऑफ एजिंग आर देयर, we are going to see those signs of aging on our skin. We cannot stop that. We just with the help of face yoga, we try to delay those signs of aging, like wrinkles, or maybe signs of other body issues, like if you are overweight, or if people are overweight, or if they are not overweight in the body, sometimes the fat only accumulates on your face. Like majorly it happens with women. I would like to take an opportunity because I'm a mother of a 5-year-old girl, and after delivery, many of you must have gone through body weight issues, or that if you're not increasing, if you have not increased weight after your delivery, but at least it all sees on our face also. Like you get the double chin over here, the jawline, you miss your jawline, you actually cannot see the jawline, what is, so all that puffiness and chubbiness on the face, so that can be reduced with the help of face yoga. There are many exercises to decrease the fat on your cheeks, on the chin, the cheekbones, the jawline. You can sculpt your natural jawline, whatever is your bone structure on the face, you can get that natural face shape. You cannot change your bone structure of the face. If you have, like, there are different kinds of bone structure. People have different face shape. Some have pentagon shape, some have square shape, some have oval or egg shape, some are round shape. That depends on the bone structure, how your bone structure is. So you'll get your natural face shape according to your bone structure. If you have a square shape, you are not going to get an oval shape face, and reverse. So this is what is not possible with post face yoga, but definitely you can get your normal young skin, as well as sculpted and very prominent jawline with regular use of face yoga. That has to be regular. It is like any other form of exercise. As with body also, if you want to shape your body, if you want to lose weight, if you want to work on some kind of diseases or disorders with yoga or exercises, you have to be very, very regular and religious with the exercises. So this is the same thing with face yoga also. You cannot do it on and off and say that, no, I'm not getting the results. Definitely, I am here sitting. This is my face after, 2 years of proper face yoga. And I have got the results myself. And I have trained over 500, 600 people for the teachers training of face yoga also. And daily, at least I'm taking 5 classes of face yoga, personal sessions, and people are not
like, you know, leaving the classes because they are getting so many results. In fact, you know, we try to combine this face yoga with the pranayams also, and other kind of asanas or exercises we suggest to people, or, you know, advise to people for their basic some underlying disorder that shows on their face. Maybe, you know, we if we work on that areas also, if we work on some disorders or underlying causes, you will get a complete healthy body, and that's how you can, you know, show your healthy body on your face also. Like, just for an example, I'll tell you that I had a client, and she was very overweight, and she was suffering from thyroid. So when you're suffering from thyroid, you're overweight, and it is seen on your face also, right? We just gave her face yoga exercises, definitely, because she joined as a face yoga client. But then I gave her some pranayams for the thyroid thing also, thyroid disorder. Now I am a very proud teacher to tell you that she has stopped taking her thyroid medicine because her thyroid has come normal, and she is working, you know, regularly on her face also, and it is also getting in shape. So we have to, like, you know, that's how you as a teacher, you as a participant, if you're practicing practitioner, you have to know that, you know, what is wrong with your body, where you can, you know, cure that underlying cause or root cause of the thing. Like, just for say acne, it is a common problem, and that's why people use or, you know, join face yoga sessions. But then you have to know what is the main cause of your acne. Are you not taking a proper skincare routine? After 30-35 years of age, we may be very careless towards our skin, but then it shows on our skin. It is telling you that take care of me. You have to listen to your body, you have to listen to your skin. So proper skincare routine, daily skincare routine. Yes, it takes a little time, 5-10 minutes, that we as a women maybe, or maybe as a men who are working day and night with MNCs, they do not get time to work on themselves. But I'm telling you, working on yourselves you know, should be the most high priority in the life, in your life. Because if you want to stay there with your family, for your family, you have to work on yourself also, and that is how you will stay there for a longer period of time with them. That is why also our faces, everyone wants to look young. Nobody wants that wrinkled face, nobody wants that sagging skin after 35 years of age, or maybe, you know, the pigmentation or dark circles. Everyone is worried about their face. So I'm telling you, face yoga is there. Do not worry, you have to just give yourself time. So that is what is needed for your face and skin especially. So let me tell you some pics. I'll show you some pics, what happens with our aging skin and how can we reduce it. I'm not saying we can stop it completely, but yes, we can reduce the onset or coming of these wrinkles, or, you know, puffiness on the face, the swelling on the face. When we get up in the morning, the face is so much swollen. It is all lymphatic fluid, and the fluids build up in the face. Sometimes you get so much pain in your this particular area. You know, people may relate who have sinusitis or migraine kind of condition. You maybe, you know, just for an example, maybe as a layman, as not from a yoga background, I may just understand that I am having a migraine. Why? I don't know that. You know, consult a doctor, consult a yoga teacher. They may tell you that why it is happening. Maybe the migraine can be the reason of your acidity, you know, or the irritated bowel syndrome. Because of the acidity, people get migraine. The acne, because of hormonal changes, people get acne. Or maybe just for pollution, you're not cleaning your face properly. That may be the reason, right? So this is how you can just actually, by attending some sessions, or maybe, you know, consulting some expert, you can know what is the underlying cause. So I'll present you some pictures. Let's start with the wrinkles, which is everyone's concern these days. Okay. Okay, so somebody unmute and tell me if you can see the picture. One person, anybody?
Yes. Yes, we can see, Yes, Paricha. thank you. All right. So this is how we look in our 70s, or some people look in their 70s, and you can actually reverse this. I'm not telling you to reduce the onset, I'm telling you to reverse this also. Like, people have started face yoga sessions in their 50s and 60s also, and they have already got the results, like, they look maybe on their in their 40s, or that much tight skin and firm skin they have. I'll show you the pictures also ahead. So these are the basic wrinkles, and you won't believe that we have names for the wrinkles also. So in this picture, all the wrinkles names are also given. So we have the wrinkle coming from the mouth corner to the chin, radiating to the chin. It is called the marionette lines. When we smile, there is two troughs, so these two projections are there. These are very prominent, and it happens with everyone, with the younger one also. These are general folds of your face or anywhere in the skin. But then when they deepen and your skin starts sagging because of the aging skin, and because of not taking care of it properly, then what it is called as wrinkles, because it gets deeper and deeper, and they start showing on your face. So these are the marionette lines, these are the nasolabial folds, the small 3-4 lines what we can see on different, on people's faces, on the outer edge of the eyes. These are called as crow's feet line. The inner corners, they are called as the bunny lines. So we have different names of the lines or wrinkles also. And these wrinkles, with proper care, I'm not taking exercises for wrinkles, we have specialized massages, and the massage is the uplifting massage. With regular use of some exercises and massages, it is not the facial spa massage. It is general 5 to 7 or 10 minutes of daily at home massage, which you can do it yourself before going to bed. Maybe, just give yourself 10 minutes, and you can reverse these wrinkles. I'll show you the results, a little later. So these are the wrinkles. Now, next picture, this is, if you can see, this is on the half of the face, the lady's face. It is the muscles. Muscles are thread-like structures. Whatever muscles we have, they are thread-like structures. And you can see, in which direction the threads are going. So when we tell you about the massage, the lifting massage, these are different massages names also. These are very, very, biological names. It's a little bit difficult to, pronounce them or learn them also. But the major thing is you should know which muscle is used for which purpose. Like, the eyes, when you blink your eyes, this lid. So these muscles, like muscles of mastication and temporalis, all these muscles, are used. The muscles of mastication, like these muscles, they are used in chewing, when we chew our food. So these are the muscles. It is not necessary for you to know why is there, what is their work, what is their significance. These muscles significance in concern with face yoga is in which direction they are. That is why we show this picture, because we have to take our massages in that direction. And we generally, what we do, we are actually smoothening our muscles so that it does not sag down, it does not create wrinkles. And when these kind of muscles, they lose its elasticity and protein structure with aging, of course, they kind of start sagging, and the proteins or the thread like structure, they start deteriorating. Because it is natural, with sun, UV rays, with pollution, with lots of tension and stress, that is also works on your skin and hair. And that is all the reason. So I'm again telling you, you have to take a very, very good care of your skin after 30-35 years of age, if you really want your young skin, or to look naturally beautiful, and natural glow, or without any kind of blemishes and dark spots and everything. You can actually achieve that. So now let's come to some, I'll tell you some of the results. I'll show you just for an example. If you can see this, or I'll zoom it. So these are some of the pictures what we have of before and after of practicing face yoga. I'm sure you everyone can see that, right? So after this particular result,
I'm not sure what is the age of the lady, but this particular result you can achieve within 45 days. Can you believe it? Within 45 days of every day doing the exercises and massages sometimes, because it depends how what type of skin you have, and that is what face yoga works with you. And I'm not telling that with this you have to keep, you know, a check on your food also. This is just with the exercises, just with the exercises. If somebody is not able to do the massage because of skin sensitivity or too much of oily skin, or sometimes you can still get the results with only the exercise. With only the exercise, you just have to work more about on it, because there are some people who cannot do massages because of their skin sensitivity or some kind of, I myself is an example. I can't do makeup, I can't use any kind of oil. I can't use. I have to try and test on my skin first if it suits me or not. There are some essential oils which are just used 1 or 2 drops only in the carrier oils. So we give every information about the oils and essential oils also, serums also, which serums you can use, we cannot use, what are the do's and don'ts of using the serums and oils, of course. So that is where, an expert advice comes in play. Like you can go ahead with watching videos of so many experts are there. I myself, keep myself updated with so many videos. But then you have to know the basics very properly, the concepts, and that is how you can get the results. So these are the results. This is the another results of one of the person. You can see the double chin, or this is called the turtleneck or double chin, right? So this is a major working area, double chin especially. And this not comes with the age. It can come on anyone, on the young people also. So this is a very, we have like so good exercises for double chin. For double chin, you can actually see the visible results in 30-35 days of regular practice. So this is how you can transform your face. With sagging skin, if you see the picture, when you actually work on your turtleneck, because that is somehow one of the reasons of sagging skin also, and of course the fat accumulation in the neck area, when you work on this particular area, you start getting your jawline also. Can you see in the picture? It is just the picture for the double chin, the turtleneck, but then you can see the changes in the jawline as well, right? So this is how you can get. I'll tell you some of the exercises also. You can try it yourself at the home. Now we come to celebrities. There are so many celebrities. If everyone is from India, you know this girl, right? You know this lady. Yeah. Yes, this is Meera Kapoor, right? So Meera Kapoor, Shahid Kapoor's wife, she is a very good face yoga practitioner. She has videos also, and look at her skin and face. She's a regular practitioner. Next is like one or two pictures. Of course, we have pictures, but there are so many celebrities who are now actually, like they have faith in face yoga. So they actually go through their everyday skincare routine as well as the face yoga sculpting techniques. We use tools also, but yes, our hands and fingers are best. Yes, there are tools. There are like millions of tools available in the market, but we can use some if you want to, and definitely we get good results. But every face is a different face. Every face type is different. So everybody does not need a tool. That is how we explain them that also in course. And of course, after course, doing a course, this face yoga course, you can become a teacher also, face yoga practitioner, as well as a teacher. You can join it for yourself. You can join it for teaching also as a yoga teacher. If you want to widen your parameters of teaching, whatever you are teaching right now, pranayam, yoga, meditation, you can add one more thing, face yoga, in your classes, like that. So these are some of the things which we make and try to explain in the classes. And how do you go ahead with your lectures and sessions also. Not like let's do some
exercises. I'll tell you 2-3 exercises, which is a very good, and it goes with all, because there are so many participants. I cannot tell you each and every particular exercise for every one of you. I'll transfer to the gallery so I can see everyone if you are practicing or not, and then I'll tell you the exercises. Okay, I request everyone to do this exercise. At least I will just tell you 3 exercises, and 10 times we will repeat these exercises. And I request you to do these 3 exercises for 30 days continuously, and then see the difference yourself. Today only take a selfie of yourself, and after 30 days you take a selfie of yourself. You can compare the results. Okay, first of all, the first very good exercise is pout, right? We are not taking selfie right now, but we are going to pout. So this is an exercise. Yes. Now see, why is this a very good exercise? This is my normal face right now. When I pout, you see the jawline, the change in the jawline. Can you see? Look at yourselves also, your screens also, yourselves. When I just extend or stretch this pout on my face, again see the change. This is a normal pout. I have just stretched my pout face. These contours, people want these contours. They make it with the makeup. I've just seen some videos of the makeup. They make it with the makeup, right? And you can get that actually on your face. I'll just give you an example. Jennifer Lopez or Angelina Jolie. Girls may have seen their pictures. They are 54, 56 years of ladies. Can you tell them, like, they're in their mid 50s? Such a beautiful glowing skin and such a firm face and your prominent jawline. Okay, now we'll repeat this exercise. You do not have to hold your breath for any exercise. Just keep on breathing and hold this pout for 5 to 10 seconds. Repeat it 10 times. Okay? Yes, join me. So by doing this exercise, when you're looking at the mirror and doing this exercise, you'll come to know your exact shape of the face also. Is it, angular? Is it an oval shape? Is it a round shape? You can take break, repeat 5 times at least. Keep your body straight and very, neck straight, back straight. Your posture also matters a lot. When we slouch and sit like that, our skin is always sagging from somewhere or the other. So that is also a thing. One very good tip I will give you: chew your food from both the sides of the face and see. Because when you're chewing, you're actually exercising your jaw muscles, our cheek muscles. So if you're chewing only from your one side, only one of your side is getting the exercise, the other is not. That's when we start getting an asymmetrical face. So chew your food from both the sides. So this is why we do actually, while taking a selfie, this is why people pout, because it looks good. You get your natural face shape. Yes, very nice. Very good. Keep doing 2-3 more times more. And sip some water afterwards. Anita ji, if you want to ask anything, yes, please. Am I doing it right, ma'am? Am I doing it right? Because yes, you're doing it right. Yes, you're doing it right. I can see, like, whatever I can see on my screen. I'm trying to watch everybody right now. Have to suck inside, or no, it does not. Sucking is also an exercise, but it is another exercise. Right now, we are not sucking it in. Just a normal selfie pout. Normal selfie pout. Just lips are. Yeah.
Please mute What is the yourself. best timing? Sorry, The best timing for this exercise? I'll come to that. Ma'am, can we take the questions please at the end so we can, finish the Okay. workshop? I'll take everyone's question mostly, yeah. I did not expect these people, so we'll try to take everyone's questions. Okay, मैम pout is done. Yes. मैम चिक अंदर की ओर लेना है या केवल मुंह नहीं, को? सिर्फ मुंह को आपको स्ट्रेच करना है. अंदर वाली भी एक्सरसाइज होती है, बट वो अभी जरूरत नहीं है. जनरली दैट इज एन चिक एडवांस एक्सरसाइज. और नहीं हाँ लेना जी, है. नहीं, सिंपल. हाँ, मेरे एक्चुअली कर करके ऐसे हो गए कि मैं नॉर्मल भी पाउट लेती हूँ तो ऐसा लग रहा है शायद कि अंदर. तो आपको बस मैं नॉर्मल ले रही थी. बस ऐसे करना नॉर्मल है. करना है. हाँ, जब आप शक करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है. ओके मैम. हाँ, सिंपल सेल्फी लेते हुए जैसा पाउट करते हैं वैसे करते हैं. Okay, we are done with first exercise. Okay, relax, sip some water if you want to, everyone. Keep drinking water, water, water. Water is the key of life, and water is the key for beauty of your skin also. Right? So keep drinking water. I always try to, finish 1 liter of water, and I try to let people also finish 1 liter of water during our sessions. So my 40-45 minutes के session में मैं ट्राई करती हूँ सबको एटलीस्ट एक बॉटल पानी पिला दे. पीते रहिए पानी. टेक अ ब्रेक, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, डीप ब्रीथ 2-3 काउंट्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज, and if you do this exercise you'll thank me. This is a very very nice exercise. I call it a magical exercise. This is called as wow pose. हम सबको अभी सैफ अली खान बन जाना है. wow, wow. यस, वाव बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिप्स को उस हिसाब से हिलाइए ताकि आप समझ सके वाव जैसे आप बोल रहे हैं. बेसिकली क्या होता है, हमको हमारे वी हैव टू वर्क ऑन आवर फेशियल मसल्स. when we work on facial muscles, it's like exercising your muscles so that they get strengthened. When they get strengthened, the skin automatically lifts up. That is what is the concept. So wow exercise works like squats on your face. जैसे हम legs के squats करते हैं ना, chairs exercise या उत्कट आसन जिसको हम योगा में बोलते हैं. It works like squats on your face. And because this is a faster exercise, you can do it a little slower also, like 2 seconds hold in every pose. Wow. Like this. But generally we go faster. So because this is a little bit fast exercise, you have to do it more times. The other exercise, maybe the slower one, or we are holding the pose like pout, we can do it for 10-15 times. This wow pose, you have to repeat at least 30-40 times. You can take a break at 15-15 and do it like, repeat the sets. So try doing this exercise at least 30-40 times right now. Yes, keep on doing. If you want to sip water in middle, take a break, take a break. I can see people have raised their hands. Please give me time. I'll give you time to ask your questions. And for the people who have not switched on their cameras, I can only see who I can see with switch on cameras. So if you're not doing it properly, I cannot correct you. Very nice, very nice. So you see, do you feel any, do you notice anything after 30-40 of time it starts paining. It starts paining because you're working on your muscles. That's how it pains. Yes. Complete 30-40 times. बीच में ब्रेक लीजिए, आराम से पूरा कीजिए.
Okay. Yes. All right. Relax. Relax. Relax your muscles. See, what happens when we start face yoga and we start getting our results also. Let's, for example, you have done it regularly and you start getting your results. When you start getting your results, you become desperate and you start doing it more often, right? So this is a very, very, very natural thing. We are human beings. It happens. But then अति किसी की भी अच्छी नहीं होती है, हिंदी में एक कहावत है, like excess of anything is not good. So try to restrain your exercises also. What happens when you try to do these exercises, like just say for example wow exercise 30-40 times, taking a break, it's okay. If you're doing it like 40-50, you can imagine the pain you're feeling only after 30 times, how much pain you will be feeling after 100 times, and you might get cramps also, muscle pull or a cramp or any kind of thing, in that. So please restrain yourself also. Give me 1 second. I'm so sorry. My daughter wanted something. All right. So this is how you have to keep control also. Like, because of advanced stretching exercise, which we, take break for body exercises also, you have to go on and take breaks for your facial muscles also. Right. And this is the second exercise. Third exercise, I'll just show you one exercise for the turtleneck, turtle or double chin. Nothing, just stretch your neck up and pout like you're kissing the ceiling. So stretch your neck up and pout like this. So this also you have to start and keep on going at least 10-15 times, not much. You can just take break also, bring your neck to normal position, take a break, relax your muscles, and again start. Stretch your muscles up, neck up. So the more you stretch your neck, the more you will get results on your double chin. It just needs stretching. People do not know that. It just needs stretching. In pout also, when you stretch your neck up and pout, you're giving a greater stretch. Do it at least 10 times. Ma'am, how long we have to hold while stretching? You don't have to hold. Keep on pouting. Pout, relax. Pout, relax. And this is how you do it. Okay. So you'll see when you stretch your neck up and pout, you get extended or more stretch on your turtleneck area. This under chin. Yes. Okay, relax. All right, relax. And this is actually this is an exercise for double chin and turtleneck, but because we are dropping our head down, this is a very good exercise for the people suffering from cervical also, cervical pain, or a kind of little bit of back upper back pain just behind your neck. So with people suffering from cervical pain, you don't have to drop your head down. That worsens the situation. So the more exercise you do it backwards, it is better for you. This is one tip I would like to give. So these are the 3 exercises, and we have 50-60 exercises. You don't have to do every exercise. It is for an instructor's course for the people who want to know for their own faces. After, if you do this course, you can work on yourself better way, like that, and that's what is the concept. So this is how we go forward. Like, just for an example, right now we are not taking the massage, but I'll tell you um um like just on starting. So what we do in massage, right? What do we do in massage? Massage is the basic thing for face yoga, to lift your wrinkles up, to reduce our wrinkles or
reduce the sagging of the skin. So as I had showed you the muscles, we always take our muscles, massage strokes upwards. That is how we go upwards and out. We never come, inside of our face. We always go out of the face and upwards, because we have to lift our wrinkles. The more you bring it or, massage it downwards, you're creating your wrinkles. If you want to lift it up, you have to go like this. That is how you do your face massage, right? So this is what is in massage. We teach a proper technique also. There is a kind of massage which is called as lymphatic drainage massage, how you can reduce the puffiness or swelling in the on the face. Why do you get the puffiness on your face? What are the reasons other than the lymphatic buildup? These are small things which we actually see on our face, but we do not know the reason of it, right? So that's one more thing I'll tell you. If after your mid 35s or in your early 40s, if you have ever come across the acne in this particular belt, this is majorly because of the hormonal changes one is going through in this particular age, the 30s, late 30s or early 40s. So this is one reason people do not know about it. They just think, where did these acne or pimples come from? I never had pimples in whole my life, and now in this age I'm getting pimples. But you have to know, this can be a cause of early menopause in maybe the ladies, or it can be like general hormonal changes due to stress of life, or more work towards something, and that is how it shows on your face. So this is few things, and few tricks and few tips which we try to provide everything, as as a teacher or as an expert, whatever we have come across. And of course, after the sessions, you have to keep yourself updated also. So this is about all the face yoga, what you can get. I'll show you what you will get in the course. When you join the course, it's a 1-month course, mainly 24 to 25 classes. You will get all the recordings, the PDFs, the study material, basically. Yes, we have the study material for face yoga also, from expert to general study material as well. We try to include the anatomy of our skin, how is skin built, what layers you have to take care on, like take care about, what layers you have to work upon, how does your hair look, what is there inside your hair strand. And this is how what we try to give you. I'll show you the picture of the certificate, what you will get after the completing of the course. So yeah, so this is how you get the certificate. You get your e-certificates or the soft copy right after the completion of the course, and it takes time for hard copy to reach your addresses, and you will get your hard copies also. So this is how our course is all set. I'll just stop sharing it if you have all have seen it. Okay, I can take questions now, please. I'll start with Monica Saxena. Please unmute and ask your question. थैंक यू मैम। मैम वेरी नाइस सेशन। एक तो मेरे को ये बात पूछनी थी, जैसे अभी आप बता रहे थे, मेरी एज समय मतलब 51 प्लस में हूँ मैं, तो जो स्टार्टिंग से जो फिगर का मतलब फेस का जो शेप है, तो इसमें वी शेप जैसे मैं चाहती हूँ कि अभी जैसे आपका आ रहा है जॉ लाइन में, और ये चिन वो जो चिन का जो है वो राउंड में है मेरा एक्चुअली, तो ये एक्सरसाइज से कुछ वी शेप में मतलब आ पाएगा? जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ चीजें इसमें इम्प्रूव होंगी बट कुछ नहीं भी होंगी। हाँ, जो आपका नेचुरल फेस शेप होगा मैम, आपका वो मिल जाएगा आपको। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही मिलेगा, वी नहीं मिलेगा। यस, यही लेट मी जस्ट कंफर्म यू दिस, स्क्वायर वालों को वी नहीं मिलेगा, वी वालों को स्क्वायर नहीं मिलेगा, है ना? तो ये फेस होगा वैसा, ऐसा ही बोन स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते ना। तो ये तो है इसमें लिमिटेशन जी। और मैम नोज का थोड़ा पूछना था, जैसे नोज में इम्प्रूव होगा ना? नोज के शेप में बोल रहे हैं आप? जी।
नहीं नोज जैसे के शेप में, हाँ देखिए नोज के शेप में क्योंकि मसाजेस में ऑफ कोर्स आता है, टूल्स भी आते हैं, तो ये सब थोड़ा बहुत चेंज होता है। वो जो ऑफ कोर्स नोज जॉब वाला जो चेंज रहता है वैसा नहीं मिलेगा, कि आपके जो अगर फ्लैड नॉस्ट्रल्स हैं तो वो फ्लैड ही रहेंगे, वो पूरे अंदर नहीं चले जाएंगे। दैट इज वाई पीपल गो टू क्योंकि ड्रूपी आर्टिफिशियल, ना हाँ, एज के हिसाब प्रोसेसेस। से जो चीज ड्रूपी हो रही है उसमें थोड़ा सा अप। हाँ, वो स्किन अपलिफ्ट आपकी कहीं की भी आपकी हाँ हाँ सैगिंग है, ड्रॉपिंग है, ड्रूपी लिप्स है, ड्रूपी आईलिड्स है, हाँ। इन सब में जरूर बेनिफिट मिलता है। ओके जी, मैम। मैम सेशन लाइव ही होंगे ना सारे? लाइव सेशंस होंगे मैम, जिसको आपको जिनको नहीं ज्वाइन कर सकते उनके लिए रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस की जो लिंक है वो ऐसी रहती है कि आपके पास हमेशा रहेंगे, मतलब जो जब तक आपके पास लिंक है तब तक आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस है। मैम ओके, कब से है स्टार्ट ये? ये प्लीज राजीव सर से कांटेक्ट कीजिए इसके लिए। आई टेक अनदर क्वेश्चन। ओके। Namaste. Yes, we will start this course from 13th of October. This will be live and you will be get recording sessions that will be valid in lifetime on your email ID. Also in this course, including live, pre-recorded, PDFs, notes, and soft and hard copy of certificates. This is internationally recognized from Yoga Alliance USA. You can search on Yoga Alliance site Subh Yoga Foundation, and you can also search me on there, Yogacharya Rajiv Kanswal. I will be there, RYD, registered yoga teacher. Also, we have RYS, registered yoga school, 200 hours, 300 hours, and RPYS, registered prenatal yoga school. That is best for pregnancy yoga courses. We have Dr. Smita ji who will take pregnancy yoga courses also. Okay, thank you, Rajiv ji. Thank you so much. So he just stated all the courses we have, all the courses, and you can inquire about all the courses. For face yoga courses, he just told that we are starting from 30th October, that is Monday. And the time will be, I think, 8 to 9 p.m. only. So this will be the time, and I will be taking the English batch, the English language batch. Okay, there is one more teacher for the Hindi one, so you can register for anything. Next, please, Reena's iPhone. Yes, please unmute and ask your question. Reena. Yeah. Hi, good evening. Hi. Hi, can you hear me? Yes, I can. Okay. I just have a quick question. Like, this is an amazing workshop. Thank you for sharing your knowledge and information. All I wanted to know is this workshop also includes e-certificates? Workshop, you will get the participation certificate. The Okay. And this course yes. is Sorry? okay. And that would be like an e-certificate. That would be like an Yes, e-certificate, that would be an right? e-certificate. A certificate of participation you will receive. And this course duration is for 1 month or 45 days? 1 month. The The face yoga sessions will be course. around 24 to 25 sessions. 1 month means 5 days. We generally take from Monday to Friday. And that's how, like, around 25 sessions. Okay. So is the 100% attendance mandatory, or like we Ma'am, can no. take like online Yes, classes we and no. You can see and refer the recorded. We understand because we all are working, and this is not a working school. professional? Yes. Yes, these are for Yes. professionals, definitely. So Yes. definitely, we would want your, live attendance in the live thing as much as we want that. We understand that you Mm-hmm. are not able to attend each and every classes, right? You may have other jobs also and duties also. So you can always refer your recordings and, ask me questions the next day or maybe after 2-3 days whenever you're referred your recordings. And the last question is Yeah. do we have to go through any assessment, or after the completion of the course No, we'll get ma'am, the it is from Yoga Alliance. So Yoga Alliance just works on the training method. We do not have an assessment. Just for Got my, it. my satisfaction in the last 2-3 classes, I try to ask some questions so that I know that I've taught well. Absolutely. Yeah. Thank you so much. Thank you. Sujan ji, Sujan Sen Gupta. Good evening, Namaste. Yeah. This is Sujan Sen Gupta from Bangladesh. Yes. Thank you very much, Subh Yoga Foundation. Actually,
They are helping us in Bangladesh yoga sector very elaborately. Recently, I have completed 200 hours course from Subi Yoga Foundation. Oh, very well. Thank you, Rajiv sir. So actually, I want to ask you, ma'am, how many times in a day or how long will practice or will make Practice. practice? Yes. So what you so that- happens, like depending on your face, shape, like what result you want. If you have too much fade, too much of double chin, like 2, 3 double or triple chin, and that we can't see even the neck, and of course you need more practice. At least it will take 3-4 months to get the results. But I suggest people every day to do your exercises twice a day. And these are exercises we need not our hands. So whatever we are driving, we are watching TV, we are doing something, we can do this exercise. That's how I started doing it. Like whenever I'm driving a car or, driving my scooty, I am like, pout. For 10 minutes, if I'm driving, I can do 10 exercises like that. So that's the beauty of these exercises. You can do it everywhere. So twice a day, I suggest, but yeah, it depends on your time availability also and your, consideration, like how much you want that in on your face. So that's how you do it. Fine. Okay. Vandana Chavda ji. Okay, ma'am. Thank you. Thank you to all. हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। Yes. मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो आपने जो एक्सरसाइज बोली है उसके बाद वो जो मसाजर आता है उससे हम मसाज कर सकते हैं क्या? मैम कर सकते हैं, इसी के बारे में हम बताते हैं। उसमें ये जो मसाजर्स और जो भी आप जो टूल्स देखते हैं ना मार्केट में या ऑनलाइन, दीज आर जस्ट एन एनहांसन, मतलब वो थोड़ा सा एनहांस करने के लिए है मसाज। आपकी उंगलियां और हाथ बेस्ट है, तो करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, तो उसके बाद मसाज ऐसे हाथ से भी या फिर हाँ। मसाजर से कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जी राजीव सर कुछ बोल रहे थे? नहीं मैम, थैंक यू। अच्छा, और किसके क्वेश्चंस? उषा जी बोलिए। मैडम, ये जो आपने अभी बताया मेरे को इतना कुछ समझ में नहीं आया, आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था। जी। बट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो हम फेस योगा का जो कोर्स करते हैं इसमें काफी लोगों को ना पिंपल्स हैं बहुत सारे। जैसे अभी मेरा स्किन है, पहला बहुत ग्लोइंग था, अभी डल हो गए हैं। तो इसके लिए सिर्फ योगा ही है कि कुछ और भी इसमें कुछ अप्लाई नहीं, करना है? हाँ इसमें अप्लाई मतलब ऐसा आपको कुछ ब्रांड नहीं बताया जाता कि हजारों रुपए का आप ये ब्रांड खरीदिए, और इसमें आपको एक सिंपल आपके हिसाब से स्किन केयर रूटीन बता दिया जाएगा। मतलब कोर्स है तो लोग 100 लोग ज्वाइन करते हैं, तो एक जनरल स्किन केयर रूटीन बताया जाता है, लेकिन उसपे बताया जाता है कि आप कैसे आपके स्किन टाइप के हिसाब से आप क्या यूज करें, नॉट ब्रांड्स प्रोडक्ट्स। हम ब्रांड्स आपको सजेस्ट नहीं करते, वो आप देखिए आपको कौन सा ब्रांड यूज करना है। जैसे अभी देखो, जिसको मेजर स्किन का प्रॉब्लम होगा, जिनको झाइयां होती हैं, जिनको पिंपल्स, जी तो ऐसे लोग ज्वाइन करेंगे तो वो इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर नहीं, उसके सब लिए करते हैं मैडम, करते हैं। आप देखिए कब से चल रहा है, कम से कम 600-800 लोगों को मैं ट्रेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ये क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल क्वेश्चंस है, सबके पास होते हैं। मेरे 4 महीने पहले मैं खुद इस प्रॉब्लम से गुजर रही थी, लेकिन प्रॉपर स्किन केयर रूटीन से मेरा पूरा फेस साफ हो गया। लाइक मैं पिक्चर्स अभी तो नहीं है मेरे पास, बट लाइक ऑल मेरा पूरा ये बेल्ट पिंपल से भरा हुआ था। और ऐसे ही वही लगता है कि कभी पहले हमको कभी नहीं था, लेकिन अब कैसे आ गया। तो बहुत सारे रीजंस है, जैसे मैंने आपको बताया। जी, काफी लोगों को स्टार्टिंग से ही होते हैं। हाँ वो होते ही हैं, तो वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो वो आप हार्मोन्स पे अगर काम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर स्किन केयर रूटीन लेंगे आप डेली, मैं वही बता रही हूँ आपको, तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी स्किन पे। जी। और एक दूसरा, अगर हम क्लास करवाते हैं लोगों को तो सबसे पहले उनको ये चाहिए कि उनका जो स्किन टोन है वो अच्छा होना चाहिए, और दूसरा उनका स्किन ग्लोइंग होना चाहिए। मैम स्किन ग्लोइंग और टोन मतलब आप क्या फेयरनेस की बात कर रहे हैं, है ना? तो फेयरनेस की मैं आपको बता दूं, फेयरनेस सब मिथ्या है। इट इज अ मिथ। इफ यू आर डस्की यू विल रिमेन डस्की, इफ यू आर fair you will remain fair, if you are wheatish you will remain fair.
एक चीज होती है फेयरनेस, गोरा होना, एक चीज होती है ब्राइटनेस, ब्राइट होना। आपका जो स्किन कलर है उसी में ब्राइटनेस आ सकती है, लेकिन फेयरनेस अलग चीज है। तो फेयरनेस के लिए जो पार्लर्स और स्पास में अलग अलग आर्टिफिशियल इंजेक्शंस होते हैं कुछ केमिकल्स के, वो जरूर थोड़ा बहुत फेयरनेस लाते हैं। आप नेचुरल चीजों से ब्राइट कर सकते हैं, जो लगेगा दूसरों के कि आप फेयर हो गए, बट दिस इज एक्चुअली ब्राइटनेस, क्योंकि आपकी स्किन ग्लो करने लग गई है ना। और कुछ क्या होता है, कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम डस्की स्किन है या हमारी डार्क स्किन है। यंग लोगों को मैं बात बता रही हूँ, वो क्यों होता है, क्योंकि हम बाहर ज्यादा जाते हैं, सन में ज्यादा घूमते हैं, यंग लोग हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्किन आपकी टैंड है, आपको नहीं पता है ना, और हमको लगता है डस्की स्किन है। लेकिन आप लोग लॉकडाउन में देख लिया होगा, जो गोरा निकल गया वो एक्चुअली उसकी स्किन थी, राइट। जिसको गोरा नहीं हुआ वो उसका वैसा ही स्किन टोन था, क्योंकि आप 3 महीने बाहर निकले ही नहीं। और ठंडी जगह में जाके जरूर फर्क पड़ता है लोगों को, क्योंकि सन टैन इतना नहीं होता, इसलिए ये सब स्किन में बहुत ही ज्यादा हाँ, one more question और, ये जो अपना जब भी कफ होता है, सर्दी जुकाम, तो अपने यहाँ पे दर्द होता है, तो ये जब भी ये कोर्स होगा तो ये सब इसका भी ये सब बताएंगे बताया कि जाएगा मैम, उसमें सब बताया जाएगा जी, क्योंकि फाइनली आपके चेहरे पे उस पे असर आ रहा है। ये सब बताया जाएगा कि किस किस चीजों से आपके चेहरे पे असर पड़ सकता है। ओके। हाँ, लेकिन ये मैंने तो पाउट किया, हाँ जी। तो यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया। नहीं मैम, आप आया, आप मिरर के सामने करके देखिए, है ना, आपको पता चलेगा कि आपका नॉर्मल फेस कैसा है। पाउट करने के बाद आपको शेप समझ में आने लगेगा। जरूरी आता है, वो आता ही है, हो नहीं सकता, क्योंकि जॉ लाइन तो है ना, बोन स्ट्रक्चर तो है ही वहां पे, ऐसा तो नहीं कि बोन नहीं है। ओके फाइन थैंक जी, यू। थैंक यू। सुमीत कौर। गुड इवनिंग मैम। मैम सेशन बहुत अच्छा था मैम। अभी आपने जैसे बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या पोल्यूशन की वजह से, ऑयली फूड की वजह से एक्ने हो जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर, और उन एक्ने को हमें टच नहीं करना है ना, फिर उससे वो, क्योंकि उसके दाग सपोर्ट पड़ जाते हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि मेरे एक जैसे हमने फेशियल हेयर रिमूवर होता है, उसकी वजह से भी एक्ने की प्रॉब्लम होती है। मतलब मैंने लिया सकते था, हैं। मैं हाँ अपनी ही बात करूंगी अपने, तो वो जो एक्ने मार्क्स है मैम, चाहे वो किसी भी रीजन से, चाहे वो हार्मोन्स की वजह, इम्बैलेंस की वजह से है या किसी, और उसके सपोर्ट पड़ गए हैं, तो क्या फेस योगा से वो एक्ने मार्क इस एज में, मतलब 40+ एज में, क्या वो ठीक हो जाते हैं? फेस योगा फेस में, योगा अच्छा, से फेस योगा के एक्सरसाइजेस से नहीं होगा। फेस योगा वो में जब हम फेस आपको स्किन स्ट्रक्चर। केयर रूटीन हाँ हाँ। बताते हैं, तो स्किन केयर रूटीन में आप इस चीज के लिए क्या यूज कर सकते हैं, उससे हो जाते हैं मैम। ओके क्योंकि जिसके ऊपर, ओके जिसके ओके। चेहरे पे पिंपल्स हैं, वो पिंपल जैसे जैसे जाएगा तो दाग तो छोड़ के जाएगा, ऐसा होता ही नहीं कि दाग नहीं छोड़ता, हाँ है ना। तो उसको आपको कैसे यस कम करना है, वो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल जाते हैं, उससे भी जाते हैं। मैम। मैं, मैम हाँ, फेस मेरा योगा फेस से हम अपने फेस को, जी, यस मैम, वही मैंने देखा कि आपने भी बताया कि आपका भी एक्ने था, बट वो इस हाँ टाइम बहुत शाइन कर रहा है स्किन के जी, ऊपर। तो मैं बस फेस योगा से हम अपने नेचुरल फेस की शेप में आएंगे, और एक बैलेंस डाइट से हम उसको ग्लोइंग और एक्ने, मतलब जी। एक्ने मार्क्स को बैलेंस रिमूव कर डाइट सकते तो हैं ऑफ कोर्स, प्रॉपर हाँ, क्योंकि रूटीन वो से। ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है। हाँ जी मेजरली मैं बोलूंगी स्किन केयर रूटीन, मतलब आपका मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन क्या होना मैम, ये चाहिए, नाइट स्किन स्किन केयर केयर रूटीन। जी, मैम कोर्स के अंदर ये स्किन केयर रूटीन हमें समझाया जाएगा, बताया जाएगा, अगर हम इस बिल्कुल कोर्स को बिल्कुल ज्वाइन करते हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं मैडम। ओके एक्चुअली एक ओके महीने ओके क्या है ना, ये कोर्स इसलिए चलता है, लास्ट लास्ट के सेशंस में आप देखेंगे सिर्फ प्रैक्टिस ली जाती है। मैं स्किन केयर रूटीन मैं ओके ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये 8 से 9 का ऑलमोस्ट नाइट का टाइम है, तो मैं साथ में करवाती चलती हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे, अनटिल एंड अनलेस कोई टॉपिक बहुत बड़ा है और उसको हमको कंप्लीट करना है। तो मैं स्किन केयर रूटीन ओके रोज करवाती हूँ, ताकि 30 दिन बाद आपको पता चले कि आपके फेस पे क्या चेंजेस आए हैं, है ना। तो मैम थैंक आपके यू जब मैम, आपकी चेहरे वो पे टिप्स। आएंगे तभी आप आगे लोगों को बता सकते हैं, तभी आपको बिलीव आएगा। थैंक यू। जी, यस मैम वन मोर थैंक यू क्वेश्चन, मैम, एक थैंक और, यू। ये जो गुड इवनिंग मैम। थैंक यू। सीमा जी, हाँ बोलिए।
जो भी फेस मसाज करेंगे तो इससे अपनी आईज पे तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा ना? आईज पे अपना कोई इफेक्ट तो नहीं रहेगा ना इसका? ऐसा मतलब मुझे इफेक्ट, मतलब आप नेगेटिव पूछ रहे हैं या आईज की एक्सरसाइज पूछ रहे हैं? हाँ, आईज अपनी जैसे धुंधलापन वगैरह, वो आईज कमजोर तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं आंखें नहीं ऐसे नहीं नहीं या नहीं, तीन आईज होंगी या आईज कमजोर में कोई ऐसे? फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट हम आईज की भी एक्सरसाइजेस बताते हैं, तो वो भी रेगुलर आप कर सकते हैं। मतलब उससे कोई हार्म नहीं है। फेस योगा तो फेस पे कर रहे हैं, आपके आंखों पे कैसे नेगेटिव कोई इफेक्ट आ सकता है? नहीं नहीं, नेगेटिव तो नहीं जाएगा, बट जो जी। फेस का योगा है तो आंखों के मसल्स भी सब पास में ही है, तो हाँ उसमें आपको भी कुछ बेनिफिट होगा कि हाँ, बस? डेफिनेटली सारी एक्सरसाइजेज होती है मैडम, माथे से लेके आंखें, आईब्रोज, कान। इनफैक्ट मतलब एक्यूप्रेशर जब हमारा सेशन होता है, एक्यूप्रेशर में कहाँ कहाँ आपके कान में होता है, पूरे चेहरे पे, मतलब नेक तक ले लीजिए, सब जगह की एक्सरसाइज है, एवरी पॉइंट ऑन योर फेस। सीमा जी प्लीज, सॉरी। जी मैम। मैम अभी मोस्टली जैसे स्किन केयर के लिए जो फेस मसाज मीन्स एक दो मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो उसमें बायो ऑयल करके आता है। तो जैसे स्किन केयर ऑयल आता है, बायो ऑयल स्पेशलिस्ट आता है, यूनिवर्स आता है, तो सब ये इस टाइप के यूज करने चाहिए? मैडम ऑयल्स देखिए, जैसे मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स अवेलेबल हैं, वैसे ही हजारों ऑयल्स भी अवेलेबल हैं। ये कोई भी प्रोडक्ट का एक बेसिक थंब रूल है, अपने आप के स्किन टाइप के हिसाब से यूज करना चाहिए। आप कोई भी यूज कीजिए, बायो ऑयल यूज कीजिए, घर का कोकोनट ऑयल यूज कीजिए, सेसमी ऑयल यूज कीजिए या ऑलिव ऑयल यूज कीजिए, आपकी स्किन को सूट होना चाहिए। हो सकता है बायो ऑयल मुझ पे सूट हो रहा हो, आपकी स्किन को सूट ना करे। तो ये कोई भी ना यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि बायो ऑयल सबको यूज हो सूट होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप, ऐसा है जी। नहीं, इसमें स्किन के अकॉर्डिंग ही वो बताया हुआ है कि आप यूनिवर्स वाला कीजिए, स्किन केयर वाला कीजिए ना, उसमें अलग अलग टाइप्स बताए हैं उसमें। नहीं तो नहीं, वही अच्छा जनरली क्योंकि आपने फेस देखा वगैरह नहीं है, की आप तो- जो चीज बोल रहे जी हैं, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। कई कॉस्मेटिक्स पे लिखा रहता है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, नॉर्मल टू ड्राई स्किन या नॉर्मल टू ऑयली स्किन, है ना? पर हो सकता है नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले को वो सूट नहीं किया, तो उसमें तो लिखा है क्योंकि उन्होंने जितने पे टेस्ट किया अपने हिसाब से, एंड बिकॉज दे आर ब्रांड, दे हैव टू सेल देयर आइटम्स आल्सो एंड प्रोडक्ट्स आल्सो, तो वो बताएंगे। फाइनली यू आर एट द यूजिंग एंड, आप यूज करके ही पता चला सकते हैं कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर आपके स्किन टाइप अच्छा, के मैं इन हिसाब से उसमें कोकोनट अवेलेबल है, तो लेके देखिए, यूज करके देखिए। नहीं, कोकोनट ऑयल जैसे आप बोले, कोकोनट या ऑलिव जी ऑयल, तो जरूरी नहीं है कि वो हम यूज करें तो वो भी सूट करेगा हाँ हमें। हाँ, वही मैंने तो मैं ट्राई आपको बोल करके रही देखा, हूँ। यस, बट पिंपल्स निकल डेफिनेटली चुके वही हैं। एग्जैक्टली मैं आपको क्या बता रही हूँ, जैसे कि हम मतलब इतने सारे सेशंस में मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलती कि आज आप कोकोनट ऑयल यूज करो, क्योंकि 50 लोग हैं, 50 लोगों में से हो सकता है 20 को कोकोनट ऑयल यूज ना करें। आप जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड आपका यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो सूट हो रहा है इसलिए आप कर रहे हैं, वो कीजिए। नया करने के लिए थोड़ा सा तो रिस्क रहता है कि हो सकता है वो आपको सूट ना हो। तो ये सब की चीजें के बारे में भी बताया जाता है। यू हैव टू यूज स्किन प्रोडक्ट्स, स्पेशली स्किन प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग योर बॉडी टाइप, स्किन टाइप ओनली। एंड इसमें थोड़ा बहुत ट्राई एंड टेस्ट तो रहता है इफ यू वांट टू चेंज योर प्रोडक्ट। ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता ही है, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, सेफेस्ट है, लेकिन हो सकता है 1% लोगों को ना जमे, लेकिन बाकी दूसरे ऑयल्स तो कई बार हो सकता है कि ना सूट करे। ओके फेसेस पे ये जो ऑयल्स वगैरह जो भी होते हैं या क्रीम्स होते हैं, तो जैसे नाइट क्रीम्स वगैरह आते हैं, तो फिर वो मैम? हाँ, वो भी सबके स्किन टाइप के मैडम, उसके भी अलग होते हैं। या ओके मैम, थैंक यू। जी, थैंक यू। मैम अदनान जी पूछ रहे हैं सर्टिफिकेट के लिए कोई अदर प्रोसेस फॉलो करना है? नहीं, आपको सिर्फ कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स खत्म के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कल मॉर्निंग में लिंक दे देंगे कोर्स की, जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना है, प्लीज आप सर राजीव सर से बात कर लीजिए। और क्या है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? एम्प्टी स्टमक, ये कौन पूछ रहा है? एक लोकनाथ जी है यहाँ पे कि चले गए? लोकनाथ जी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज।
ओके, आई थिंक ही लेफ्ट. फी स्ट्रक्चर प्लीज राजीव सर से पूछिए. जानकारी के लिए राजीव सर को कांटेक्ट कीजिए. एंड यस, जो हिंदी बैच रहेगा, जो हिंदी फेस योगा का बैच रहेगा, उनकी लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर का नाम है पूनम जैन. पूनम जी हिंदी वाला लेंगी, मैं इंग्लिश वाला लूंगी. तो प्लीज आपकी लैंग्वेज ध्यान से देख लीजिए कि आप बैच में कंफ्यूज ना होए. लास्ट 2 क्वेश्चंस प्लीज, बिकॉज मेरे दूसरा सेशन भी वेट कर रहा है. पल्लवी जी, पल्लवी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यस. मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है. बेस्ट टाइम. Yes, ma'am. In morning or at night time? एक्सरसाइजेस तो आप दिन भर में कभी भी कीजिए. मसाज के लिए बेस्ट टाइम है रात का. ठीक है, ये सब मैं आपको कोर्स में बताती हूँ. रात को. हाँ जी, बेस्ट टाइम्स वगैरह तो डिपेंड, हाँ, कि आपके पास अवेलेबिलिटी कब है. ओके, थैंक यू पल्लवी जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी 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 पल्लवी. जो कोर्स है ना, उसके लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल कुछ रहता है क्या उसका सिलेबस? कोर्स थियरी रहता है, सिलेबस भी है. हाँ, मैं आपको बता देती हूँ. अभी मेरे पास पिक्चर अवेलेबल नहीं है, बट इसमें क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं, लाइक फेस योगा एक्सरसाइजेस, फेस मसाजेस, फेस की एनाटॉमी, मसल्स की एनाटॉमी, हेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब आपको जो बाहर से दिखता है और एक्चुअली अंदर से क्या होता है. ठीक है, इसके अलावा एक्यूप्रेशर, न्यूट्रिशन, डिटॉक्सिफिकेशन, मेडिटेशन, प्राणायाम, आसन्स, और एक थोड़ा सा योगा थेरेपी के बारे में कि आप किस किस चीजों के लिए योगा थेरेपी भी यूज कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें पूरे कोर्स में इंक्लूड रहती है, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकती है आपके स्किन को. ओके जी, थैंक यू पल्लवी जी. प्रीति गौतम, लास्ट क्वेश्चन प्लीज. थैंक यू. प्रीति गौतम. यस मैम. हाँ मैम मुझे जी. ये पूछना था कि जैसे अपने फेस पर अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो पिंपल्स हो रहे हैं तो उसके बाद भी हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जैसे फेस लिफ्टिंग का आपने बताया, तो उसको कैसे कर सकते हैं? हाँ हाँ, मैं बताती हूँ, वो भी मैं बताती हूँ. एक्सरसाइज आप कर सकते हैं. मसाज डेफिनेटली, अगर बहुत सारे, एक तो है तो कर सकते हैं, पर बहुत एक्ने एक्चुअली प्रोन स्किन है, बहुत सारे पिंपल्स हैं, तो मसाज तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पिंपल्स बैठ ना जाए. तो अगर मेजर एक्ने प्रॉब्लम है तो उसका एक स्किन केयर रूटीन होता है. जब वो आप करेंगे 30-40 दिन में आपके एक्ने बैठ जाएंगे, और उसके बाद आप मसाज कर सकते हैं. डेफिनेटली मसाज नहीं कर सकते आप पिंपल स्किन पे, बिकॉज उसमें बैक्टीरिया जर्म्स रहते हैं, वो फैल जाते हैं. ओके मैम, थैंक यू मैम. थैंक यू. सो थैंक यू वेरी मच. प्लीज, आई एम सो सॉरी, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं ले सकती. वन मोर सेशन इज वेटिंग फॉर मी. Okay, please direct your all questions to Rajiv sir, and hopefully I will see you in the course. Thank you so much. Rajiv sir, good night. गुड नाइट. Good night everyone. Good night. Thank you so much for joining. Good night.